Hello. Yeah, okay, fine. Hello, good morning, everyone. My name is Asmit Joshi, and I'm working since 2 years in Secura Group. So we are a part of Sanda Group from last 14 years. It is a 14 years old company, and from 2011 we are into IT. So from last 10 years we are into IT, and we have diversified our business into the wellness, magazine, and technology as well. So we have hotels in Goa like Dudh Spa Resorts and Baywatch Resorts as well. So we have another host today. His name is Mr. Himanshu Modi. He's working as a technical director in Secura Group from last 13 years. Next slide, sir. Okay, so what's our agenda today? What's our agenda of our presentation? We will tell you our mission. What is our the mission of our company, mission of our product? What are the purpose of Secura Guard? Why we have introduced Secura Guard in the market? And how data is getting out of control, like small, medium enterprises and MNC. Why their data is getting out of control? What are the reasons behind that? And what the Secura Guard is made for? What are the benefits of the Secura Guard? And we will tell you that why you want to become a partner, means what are the advantage if you will become a partner with us. And after that there will be a product demo, and after that we will show you the pricing of each and every product, and after that there will be a question and answer session. If you have any queries, then definitely you can come up and ask the questions. So I just want to ask next. So I just want to ask a simple question to everyone who is present over here. That you are dealing with the set of employees every day, like online, offline. So I just want to ask that, do you think your business data is in your control? So I just want that Mr. Reddy, Ashish Tyagi sir, Raja sir, Shrival sir to come up with the answer. Well, in my business, it does take a lot to manage these what do you say, IT controls and all. Okay. But that is exactly why I'm looking for new solutions. Okay, fine. Okay, fine. Thank you very much. Thank you very much, Reddy. Ashish sir, you want to try? Or Raja So, sir? Do you think your business data is in your control currently in this digital world? I'm Raja, sir. Yeah. It's not controllable, sir. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Every data is not secure in digitalized. Right, 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 right. Okay. Okay, I will tell you the reason behind that. In this digital world, it's a bit difficult to keep data in your control. मीन्स पहले 15 to 20 years पहले कैसे होता था, यू कंपनी के जो भी ओनर रहते थे या अकाउंट्स वाले रहते थे, दे यूज्ड टू मेंटेन सम बुक और जर्नल. सो उसमें पूरा डेटा होता था कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है. अगर उसकी कॉपी भी हम किसी को दे, अगर किसी को जेरोक्स निकालने दे, तो हमें पता चल जाता था कि ये एम्प्लॉय को हमने ये ओरिजिनल कॉपी दिया है, उसका जेरोक्स उसके पास है. बट नाउ डेज ऐसा होता है कि मल्टीपल कॉपीज कितने जनरेट हो रही है आपके डेटा के आपको पता नहीं. यू थिंक दैट यू हैव अ डेटा इन योर मशीन, बट आफ्टर दैट देयर आर मल्टीपल कॉपीज आर जनरेटिंग बिहाइंड यू. वो कॉपी शायद आपके कंप्यूटर के पास भी होगी या आउट ऑफ द कंपनी भी गई होगी, मार्केट में भी होगी, बट आपको पता नहीं. बट आपको ऐसा लगता है कि हाँ बाबा, ये डेटा है जो मेरे पास ही है. So what is our mission? Our mission is to put you back in control of your data. That is our mission. Simple. Everything is written in the simple words. That mission is to put you back in control of your data. So now I will show you what are the benefits. What are the benefits of the Secura Guard and how it will help you to protect your data. How will it help you to protect your business data? Okay. So now we'll tell you the benefits of the Secura Guard. Next. Hello, Himanshu sir.
Okay, so what are the purpose of your secure account? Theft proof. Theft proof means what? Theft means what? चोरी करना. Theft, अगर आपके इंटरनल एम्प्लॉयज और एक्सटर्नल हैकर अगर आपका डेटा कॉपी करना चाहते हैं तभी भी आपका वो डेटा इंटरनल कंपनी से कॉपी नहीं कर पाएंगे. अगर उन्होंने डेटा कॉपी भी कर लिया सो दैट डेटा विल बी टोटली एनक्रिप्टेड फॉर्म. Whatever file they copy, whatever the Excel, PDF, Word, PowerPoint, whatever, the all file will be encrypted. Means the key will be कि अपने पास होगा बट डेटा उनके पास होगा तभी भी वो डेटा का कुछ नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज द नोन एज थेफ्ट प्रूफ. सेव फ्रॉम मिस्टेक एंड डिजास्टर. फॉर एग्जांपल योर डिवाइस गेट्स करप्टेड, लॉस्ट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आपका पूरा डेटा का बैकअप सॉल्यूशन रहेगा. आपका पूरा टोटली डेटा जितना भी उसका प्रॉपरली बैकअप सॉल्यूशन रहेगा. अगर वो लैपटॉप किसी के हाथ में भी लग गया और किसी ने कुछ करने की भी कोशिश की तभी भी वो ओपन नहीं कर सकते. आपका डेटा पूरा लॉक रहेगा वहां पे. We protect you from the online activities as well, like ransomware, fraud, CEO activity, phishing activity. अगर वो भी आपके कंपनी के ऊपर हो रहा है तो उससे भी हम लोग आपको ऑनलाइन प्रोटेक्शन देते हैं. Now third is secret and invisible. In your organization, if you want to access some important folder, कभी कभी ऐसा होता है कि hierarchy wise या management wise some important document आपको एक्सेस करना है तो आप चाहते हैं कि वो सिर्फ फोल्डर, वो डेटा, वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आप ही एक्सेस करें, बाकी कोई एक्सेस नहीं करना चाहता है. सो यू कैन प्रॉपरली हाइड दैट डेटा. यू कैन कीप अ प्रॉपर पासवर्ड ऑन दैट. मतलब वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा. अभी कैसा होता है कि विंडोज में या मोबाइल में आप कोई भी फाइल कॉपी, कोई भी फाइल हो, पीडीएफ हो, इमेज हो, कुछ भी हो, वो इजीली आप उसको अनहाइड कर सकते हो और उसका नॉलेज आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा कि इसको कैसे अनहाइड करते हैं करके. बट इसमें ऐसा नहीं मिलेगा. इसका नॉलेज आपको यूट्यूब में ऐसा नहीं मिलेगा. इसमें हम लोग आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे कि इसको हाइड कैसे किया जाता है. बाद में इसका लॉक होगा प्रॉपरली. वहां पे अगर आप पासवर्ड डालोगे तो आप वो एक्सेस कर पाओगे. इंट्रूडर प्रूफ. इंट्रूडर प्रूफ मीन्स व्हाट? इफ समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन योर सिस्टम, अगर आपके फॉर एग्जांपल टैली अकाउंट में कोई थर्ड पर्सन लॉग इन करने की ट्राई कर रहा हो थर्ड मशीन से तो आपको एक पॉपअप आएगा कि कोई तो लॉग इन करने की ट्राई कर रहा है. अगर उसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स ट्राई किए अलग अलग डिवाइस से ऑटोमेटिकली आपका पूरा डेटा वो लॉक हो जाएगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. मतलब वो डेटा सामने वाला आपका चोरी नहीं कर पाएगा. नाउ द लास्ट इज स्पाई प्रूफ. स्पाई प्रूफ मीन्स क्या होता है कि आजकल ये डिजिटल वर्ल्ड में ये स्पाई प्रूफ ये सबसे ज्यादा थ्रेट हो गए हैं डेटा लॉस के लिए. कभी कभी क्या होता है कि हम R&D करते रहते हैं, गूगल से कुछ सर्च करते हैं, कुछ EXE डाउनलोड हो जाता है, सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते. हम लोग सोचते हैं ये बाद में इंस्टॉल करें, पहले हमारा काम करते हैं. तो उसमें कैसा होता है कि इसमें पूरा डेटा का आपका रिकॉर्डिंग हो जाता है, पूरा डेटा का स्क्रीनशॉट हो जाता है और आपको पता नहीं. आपका इंटेंशन नहीं था. आपका इंटेंशन ये था कि आप सिर्फ काम करो. वो तो पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता है. आप वो EXE उधर ही भूल जाते हो, आप आपका काम पे लग जाते हो. बट उसमें पूरा जितना भी आपके पीसी का डेटा है पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता है और वो सामने वाले के पास पूरा डेटा चला जाता है. तो इसका मतलब वो डेटा उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया. तो ये अगर किसी ने जानबूझ के भी अगर आपकी मशीन में ये ऐसा कोई स्पाई प्रूफ का अगर सॉफ्टवेयर डाला हो तभी भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते. आपका डेटा टोटली प्रोटेक्टेड रहेगा. So I just want to ask one simple question to each and everyone present over here. So I just want to ask that what do you think is the real danger to the data and subsequently for the business? मतलब डेटा के लिए रियल डेंजर क्या है और सब्सिक्वेंटली बिजनेस के लिए रियल डेंजर क्या है? पीपल है या टेक्नोलॉजी है? राजा सर, Yes, sir. what is the real danger? That people are real danger for the data or technology are the real danger? Ashish First, sir? first is humans, sir. Human peoples. Right, right. Because of staffs. What are the mostly problems, sir? Data replacing and overwriting existing files. Right. Anonymously delete some files is the first thing, sir. Okay, fine. Okay, fine. Thank you very much for your feedback, Okay. sir. Ashish sir, you want to try? Reddy sir, Ashish sir, Raja sir, Shrival sir. Okay, fine. Himanshu sir, next slide. Okay, so based on our research, I think people are the biggest threat for business as well as they are known as assets as well.
So employee know about our data, where it is stored and how to get access easily. Employee को proper पता रहता है कि डेटा कहाँ पे स्टोर है, कितना स्टोर है, कैसे स्टोर किया जाता है और उसको एक्सेस भी कैसे मिलेगा, ये सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज को ही पता होता है. Many business suffer from data loss due to humans. क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, फिर बाद में वो डेटा कॉपी पेस्ट करके लेके जाते हैं पेन ड्राइव में, मेल में, कहीं लेके जाते हैं, दूसरे कंपनी में उन लोग वो डेटा रिफर करते हैं. तो टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू टू मेक योर वर्क इजी. टेक्नोलॉजी क्या करेगा, आपका वर्क इजी करेगा, आपका टाइम बचाएगा और एफिशिएंसी बढ़ाएगा. बट अगर उसको राइट वे में इम्प्लीमेंट किया गया तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, डेफिनेटली ह्यूमंस. ह्यूमंस मीन्स द एम्प्लॉयज विच आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. The threat of business come from you, employee, business partner and cyber attacks. मैंने स्पेशली यू क्यों स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे, that why you are also responsible for the data loss. So I just want to ask you one simple question that everyone know about the ransomware attacks, CEO fraud attacks, सिर्फ आप लोग ने सुना है. बट अगर ये आपके साथ कल या आज अगर अटैक होता है तो आपको ये 100% पता है कि इससे कैसे क्योर किया जाता है. Do you know how to cure from this type of attacks? I just want to ask a question to everyone. Ashish sir, Reddy sir, Raja sir, Bhavin sir. Do you have 100% knowledge about this? Am I audible? Yeah, you're audible. Okay, fine. I got reply from Ashish Tyagi sir that no. Okay, fine. So anyone want to try? Bhavin sir, Raja sir. Okay, fine. I will tell you that everyone has heard about this, but no one has 100% knowledge about the ransomware and CEO fraud activities. So I will give you one substitute example that Corona. Everyone is knowing Corona right now, each and everything about the coronavirus, the symptoms and everything. Why? Because the government has gave a proper education via television, via radio, via magazine, newspaper from each and every side. They are always bombarding each and every day, each and every minute to the citizens of the country. Why they are saying that? Because everyone should know that how to cure from it. A small person, a small children also know that if you will use a sanitizer, if you will keep a social distancing, that definitely we will be away from coronavirus. So this is what the substitute example. If you will know about the ransomware attack, CEO fraud attack, so definitely your data will be cured at your place. Okay. So how your business data get out of control? So what are the ways that your business data is getting out of the control? Next slide, Himanshu sir. So first is intentionally. Intentionally means what? Just now I said you before on the first slide, that spy proof. Spy proof what? That if you are doing your research, everything on the Google, and automatically that exe gets downloaded, and someone, and from the other hand is that, see, if some employee has installed any spy proof software, that is known as intentionally means they have copied the data. If any another employee will copy your exe, will copy your file and will take it to the another company, so that is known as intentional. वो आप पे गुस्सा निकालना चाहते हैं, वो इंटेंशनली उसने ऐसा किया आपके साथ, तो दैट इज नोन इंटेंशनली. तो आपका डेटा आपका लॉस हो जाएगा. अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली. अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली भी आपका डेटा लॉस में जा सकता है. कभी कभी एक्सीडेंटली आपका स्पाई प्रूफ से आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो गया, so that is known as accidentally. And falling victims to cyber attacks means like CEO fraud, ransomware, phishing activities. That is the online fraud activities. Means they take your all your data and after that they ask you for the money. So this is the financial loss for the company as well, and that is the time waste also. So this is known as there are the three ways that data is getting out of the control. So why do business need to take control of their data? Means why? Means what is the reason behind that business need to take control of your data? That it's your intellectual property and backbone of your business. Yeah, employees are the assets of the company, no doubt, but data are the intellectual property of your business. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट 15-20 years पहले कैसा होता कि आपका डेटा जर्नल में मेंटेन होता था, फिर बाद में
अगर किसी को आपने कॉपी करने दिया तो आपको पता चल जाता था दैट या आई हैव गिवन दिस एम्प्लॉय to copy this data. I know about this employee and everything. So after that, what happened in digital world? There are number of copies are getting generated behind you. But what do you think? No, I have my own data and that is the original data. No one has copy about it. So this is what the mentality of each and every person is currently. So I just want to give one unintentional how the data is getting unintentional out of the control. One simple example, everyone is using a Rediff mail, Gmail in your organization, right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको एक मेरा आधार कार्ड मेल किया फॉर एग्जाम्पल, तो कितने नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट होते हैं अगर मैंने आपको एक मेरा आधार कार्ड अभी मेल किया ऑनलाइन? सो आई जस्ट वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू एवरीवन दैट हाउ मेनी कॉपीज आर गेटिंग जनरेटेड ऑन द मेल? आशीष सर, भाविन सर. Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah, so for example, if I will mail you on my Aadhaar card or any document, for example, so how many copies are getting generated? Sorry, sir. Hello. Adi. Yeah, am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. What I'm saying that if I have mailed you one my document, for example, any Aadhaar card or any document, so how many copies are getting generated? How many mail copies are getting generated? One copy. Okay, fine. So anyone want to try? I think there's at least 3 copies. Okay, I will tell you. There are minimum 4 copies are getting generated. Oh. पहले होगा मेरे सेंड आइटम्स में, दूसरा होगा मेरे मेल सर्वर पे, थर्ड होगा आपके इनबॉक्स में और फोर्थ होगा आपके मेल सर्वर पे. So there are 4 copies are getting generated. If you will share the data through mail also, there are 4 copies are getting generated. So the mail server are very easy to hack. अगर मेल हैक हुआ तो डेफिनेटली वी कनेक्ट दैट मेल टू अवर ड्राइव. ड्राइव में जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो सब कुछ हैक हो जाता है. तो मेल सर्वर आर इज द इजीएस्ट सर्वर एंड वी गिव यू प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑन द मेल सर्वर एज वेल. आपके मेल होगा तो उस पर भी हम लोग प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन देते हैं डेटा सिक्योरिटी का, जिससे आपका डेटा लॉक नहीं होता है. नेक्स्ट. नेक्स्ट सर, स्लाइड हिमांशु सर. हेलो हिमांशु सर. हेलो हिमांशु सर. Ashmit, you continue. The slide will change. Okay, fine. No, now is product demo, so that's why I'm calling Himanshu sir right now. Yeah, over to you, Himanshu sir. Hello. Okay, I think Himanshu sir is on call, so I will continue now. Okay. Sorry for interruption. So we have developed 2 products that is known as Secura Guard and Secura Cyber Shield in our company. So we have focused on technology and as well as education as well. So we will talk about Secura Cyber Shield first. So we have focused on education only over here. इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग पर्पसली मॉक अटैक करते हैं. जो भी कस्टमर होंगे हम लोग प्रॉपरली मॉक अटैक करते हैं और उसमें उनको हम लोग प्रॉपरली बताते हैं कि इससे कैसे बचना है, कौन से लिंक पे आपको क्लिक करना है, कौन से नहीं करना है. अगर आपने लिंक पे क्लिक किया तो बाद में आपको स्टेप्स क्या लेना है. सो टोटल वी हैव 200 मॉड्यूल्स ऑन दैट. सो आवर मिशन इज टू कन्वर्ट योर एम्प्लॉय इनटू ह्यूमन साइबर शील्ड. तो इसमें आपको पूरा एजुकेशन दिया जाएगा ईच एंड एवरी फ्रॉड के बारे में, जैसे कि रैंसमवेयर कैसा होता है, उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, सीओ फ्रॉड, फिशिंग एक्टिविटी कैसा होता है. तो वो सब प्रॉपरली आपको A to Z आपको ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाएगा. And after that, there is known as Secura Guard. Secura Guard means what? That is specially made for Tally only, for the Tally users. अगर आपके मशीन में अगर आपने Tally इंस्टॉल किया है, अगर मैं आके आपका
पेन ड्राइव से अगर कोई भी डेटा कॉपी कर लूँ तो इजीली मैं दूसरे टैली अकाउंट में जाके वो डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। बट यहाँ पे कैसे, यहाँ पे टोटली डेटा एनक्रिप्टेड रहेगा, आपको टोटल कंट्रोल मिलेगा। आप चाहोगे तो आप कभी भी कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हो, रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो और इसको मोबाइल थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब आपका डेटा टोटली प्रोटेक्शन रहेगा। So we have these two kind of products for Secura Guard. For Secura Guard is for Tally and Secura Cyber Shield is for common, that is known as for education. Next. Okay, Secura Guard. Secura Guard is a comprehensive solution which connects with your business infrastructure. Secures by looking all form of digital content and communication from internal and external attacks. जो भी आपके इंटरनल अटैक्स होते हैं, जो भी एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं, उससे हम लोग टोटली आपको सेफ गार्ड करते हैं। टैली जितना भी डेटा होता है उसको टोटली प्रोटेक्ट किया जाता है, जितना भी टैली डेटा होता है उसको क्लाउड पे हम लोग बैकअप लेते हैं और बाद में आपको इंस्टेंट मैसेजिंग का भी सॉल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जांपल नाउअडेज पीपल आर यूजिंग मैसेंजर, सिग्नल, व्हाट्सएप लाइक एन इंस्टेंटिंग मैसेजिंग मीन्स व्हाट, उससे डेटा इजीली कॉपी हो सकता है। अगर मैं आपके पीसी में अगर मैं व्हाट्सएप वेब ओपन करूँ तो इजीली मैं फाइल को भी कॉपी पेस्ट करके मेरे दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट पे सेंड कर सकता हूँ। बट इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स क्या होता है, ये सिक्योरा गार्ड में हम लोग ने आपको फीचर दिया है, वो सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए होता है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपका कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। अगर आपने कोई फाइल भी शेयर किया तभी भी वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा। सो विथ सिक्योरा द ओनर इज ऑलवेज इन द कंट्रोल, जितने ओनर होते हैं वो ऑलवेज कंट्रोल में होते हैं। सो दिस आर द फीचर्स विच वी आर प्रोवाइडिंग इन द सिक्योरा। सो टेक बैक मीन्स क्या होता है कि अगर आपने कोई भी किसी को भी मेल किया तो आप इजीली वापस ले सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि अगर फॉर एग्जांपल गलती से किसी को मेल सेंड कर दिया तो आपने आपके सेंड आइटम से अगर डिलीट किया बट वहां पे इनबॉक्स में तो मेल हो गई उसके पास, तो यहाँ पे अगर आप टेक बैक फीचर अलाउ करते हो तो डेफिनेटली वहां से भी मेल चला जाएगा। देन अलाउ डिलीट, वी अलाउ डिलीट, अलाउ कॉपी, अलाउ फॉरवर्ड। अलाउ फॉरवर्ड मीन्स व्हाट, अगर मैंने आपको कोई आधार कार्ड मेरा मेल किया, अगर आपने वो आधार कार्ड मेरा किसी और को मेल फॉरवर्ड किया तभी मुझे पता चलेगा कि आपने किसी को फॉरवर्ड किया है करके। मीन्स अगर आपका बिजनेस का डेटा अगर आपने किसी एम्प्लॉय को सेंड किया मेल थ्रू, अगर वो एम्प्लॉय ने उसके पर्सनल अकाउंट में भी या किसी को भी सेंड किया तो डेफिनेटली पता चलेगा कि उसने किसी को फॉरवर्ड किया हुआ है। सो दैट इज नोन एज अलाउ फॉरवर्ड। सो अलाउ स्क्रीनशॉट, अलाउ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा नहीं, मतलब आप अगर मोबाइल से भी चाहो या तो आप अगर मशीन से भी चाहो तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट होगा नहीं। सो ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट, we provide you that feature also. Audit trail report means that will help you to maintain your audit activity. Like there is another feature known as internet access control, means आपके एम्प्लॉय कौन सा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या कौन सा वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं उसका भी आप राइट्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप फेसबुक ना एक्सेस करें तो वहां पे आप वैसा मेंशन कर सकते हो, तो फेसबुक आपके एम्प्लॉय ओपन नहीं कर पाएंगे। वहां पे यूएसबी लॉक का भी फीचर है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूएसबी में आपका कोई डेटा कॉपी करने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैंने यूएसबी मशीन में डिटेक्ट किया तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। अगर मैंने लगाने के बाद भी वो डिटेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो आप डेटा कॉपी करने के लिए आपने वो डिटेक्ट किया है, तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो यूएसबी लॉक का भी फीचर है हमारे पास। और अल्ट्रा प्राइवेसी कंट्रोल, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसको मेल करना है या नहीं करना है इसका भी आप प्राइवेसी कंट्रोल रख सकते हो। अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई थर्ड पार्टी है उसको मेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर मेल किया तभी भी आपको पता चलेगा। तो ये सब फीचर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, सो बिकमिंग अ पार्टनर टुडे, व्हाट आर द बेनिफिट्स? अगर आप हमारे पार्टनर बनोगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अवर पार्टनर? नेक्स्ट, data security and technology is over $1 trillion business. This application is designed specially for SMEs. स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये हम लोग ने एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है। बिकॉज कैसे होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी ज्यादा करके होते हैं, बिकॉज दे हैव प्रॉपर फाइनेंस, तो प्रॉपरली उन लोग उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। बट व्हाट अबाउट एसएमईज? तो एसएमईज के पास प्रॉपर उतना कैश फ्लो नहीं होता है, तो उन लोग डेटा एडजस्ट करते हैं।
मीन्स कहीं पे भी रखते हैं लोग डेटा, पीसी में भी रखते हैं, क्लाउड पे रखते हैं, बट उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? बट उसको प्रोटेक्ट करने के पास उनके पास सोल्यूशन नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव केम अप विद द solution known as Securaguard. So get involved with the solution that will continue to offer long-term benefits to your customer. मतलब आपके पास हम लोग जो भी solution देंगे उसका टोटली प्रोटेक्शन रहेगा और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपके कस्टमर्स को मिलेगा. ग्रो इनकम बाय सेलिंग एंड एड ऑन सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स. हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे पार्टनर बन गए तो वी ऑफर यू 25% कमीशन डायरेक्टली ऑन द सेल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हमें कोई कस्टमर दिया, अगर वो कन्वर्ट हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो कस्टमर का बिल बना फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, तो 10,000 का 25% हम लोग आपको क्रेडिट कर देते हैं एज एन पार्टनर, बिकॉज वी गॉट अ बिजनेस फ्रॉम यू एज एन पार्टनर. सो 10,000 का 25%, 2,500 वी विल क्रेडिट यू. तो अगर वो क्लाइंट ने रिन्यूअल भी किया, इंक्लूडिंग सीक्वल रिन्यूअल्स मीन व्हाट, अगर वो आपके कस्टमर ने नेक्स्ट टाइम रिन्यू भी किया, तो टोटल जितना भी अमाउंट होगा बिल का उसका 25% आपको वापस मिलेगा. मीन्स अगर कस्टमर बार बार एवरी ईयर रिन्यू करता रहा तो एवरी टाइम आपको 25% मिलेगा इनकम अर्न करने के लिए. दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू गेन एडिशनल इनकम. मीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. अगर आपने कोई कस्टमर लाया, सॉरी, अगर आपने कोई कस्टमर लाया तो उसका सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगा ऐसा नहीं है, आपको एडिशनल इनकम एवरी टाइम मिलते रहेगा. यहाँ पे कोई अपफ्रंट फी नहीं है. मीन्स आपको कोई फी नहीं पे करना है पार्टनर्स के लिए. सिर्फ आपको एक लिंक है, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है एज एन पार्टनर और आपको सबमिट करना है. दैट इज गूगल लिंक. तो उस पर आपको आपके पूरे डिटेल्स फिल करने हैं, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कंपनी डिटेल्स, एड्रेस, सब कुछ, और सबमिट करना है. तो इसके बाद पूरा डिटेल्स हमारे सीआरएम में फेच होता है. तो दैट इज यू विल कंसिडर एज अवर पार्टनर. तो आपको फुल ट्रेनिंग मिलेगा. यू विल रिसीव फुल ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, आपको प्रॉपर मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट. जो भी ब्रोशर होगा, पीडीएफ होगा, वर्ड होगा, वीडियोस, इमेजेस जो भी है वो हम लोग आपको एवरी टाइम फॉरवर्ड करते रहेंगे, ताकि आपके कस्टमर्स को प्रॉपरली फॉरवर्ड करते रहो. सो कीप कस्टमर्स सेफ फ्रॉम डिजिटल हार्म. तो अगर आप प्रॉपरली सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपके कस्टमर्स को डिजिटल हार्म से बचाओगे. और पार्टनर्स, अगर आप हमारे पार्टनर बन गए तो वी गिव यू अ फ्री सॉफ्टवेयर टू यूज. आपके मशीन में हम लोग हमारा सिक्योर सॉफ्टवेयर फ्री में इंस्टॉल करके देते हैं और आपको फ्री में यूज करने देते हैं, ताकि आप भी प्रॉपरली यूज टू हो जाए सॉफ्टवेयर से कि कैसे सॉफ्टवेयर यूज करना है, सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या है, उसको उसके प्रॉपर फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, वो सब प्रॉपर आप यूज करोगे तब आप कस्टमर्स को बता पाओगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं. तो हम लोग पार्टनर्स को फ्री में प्रोडक्ट देते हैं. नेक्स्ट, दिस इज Yes, sorry, Smith. Yeah, okay. So we will now start the product presentation. So before starting the product presentation, I want to ask each and every question, partners, did you understand about the concept of the product and everything? Hello? Hello? Yes, sir. I am Raja. Yes, Raja, you understood about the product, Mr. Reddy? Yes, sir. Yeah, I have. Okay, are you certain facing, understanding. do you think this type of solutions you are looking for, or this type of solutions you require, your customers require? Yeah, there are a few customers who could benefit from this. Good. Okay. And currently, are there anybody facing this type of issues, like their data is getting lost, or because of hard means like might be hard disk get crashed, or might be data is stolen by some employees, or might be a ransomware attack? Anybody face this type of issue? Yes, sir. Okay. Who face this type of issue, and what Yeah, type of issue you face? One of my customer is over voltage. The hard is totally burned, sir. Okay. So hard drive is burned. Anybody face the issue that that's employees has stolen some data or something like that? I wouldn't say stolen, sir. but there's a lot of access control issues we have. Okay. So might be they copied or something has happened, but you don't know. Might be. Yeah. Clear. That's good. Okay, so let me showcase the product now. So let me start the product presentation. Okay.
Okay. So now, before I start, like, can you see my product, Secura? Can you see my product, Secura now? Yes. Good. Okay. So you can see this when I shared my screen, allow share my screen. You can see blank screen manager, this window. So basically my window was blanked because means I have not share. I'm already sharing you screen mine, but you can't see my screen because in Secura by default screen sharing and print screen or recording is blocked. Okay. But due to demo purpose, I already means I assigned right now. I allow you to allow this application to share my screen. Okay. Now in Secura Guard, what we provide actually security. Okay. So we provide a cloud module. We provide an instant messaging module. We also provide you Secura File Explorer. I'm opening one by one module and then I will share with you. And I will also provide you the tele data protection. Okay. And you can see now, I will share you, you can see one by one. I'm just sharing you the screen and you can see the screen one by one. Okay, all the screen now you can see. This is a cloud module. This is instant messaging module. Okay, and this is Secura File Explorer. Okay, and this is a setting module. 4 modules I'm going to showcase you right now. Okay, now you can see in the chat module why we provide a Secura chat. Okay, so generally in the organization, whatever the communication we are used to do now is we are doing through WhatsApp or any other application. Now we have started Signal or might be a Telegram, right? So what happened if your employee left from the organization, your data might be stolen or might be there in their devices, intentionally or unintentionally. The device data is there, your communication is there, your client communication or whatever communication is there. But if you are using Secura chat, then your communication is in your control because you can check any of the employees communication in the Secura as admin. Okay, you also do the video call, audio call within the Secura. Okay, and you can also do a call in their desktop also. If they are connected to the computer on the desktop, you can also do the communication with them also. Okay, so this is the advantage here. Now, why we have provided a Secura cloud now and why we have provided this file explorer. So you can see in my computer, let me show you. In my C drive, I have a demo test folder. Okay, and you can see some files are there in the demo test folder, right? And if I want to secure with a ransomware protection, what I can need to do, I can see, you can see the demo test folder, everyone. Yeah, and you can see here option, mark its ransomware protection. So when I mark as a ransomware protection, suddenly this demo test folder is not accessible now. Now you can see this file folder is not accessible to any of the application, only through the Secura you are going to access the demo test folder. Okay, so you are blocking access of any suspicious application or any application to access the demo test folder. Now you can see in the Secura, you can see the demo test folder. Okay, you can see now, right? So this is a ransomware protection we provide. And if you see, when I demo test folder, when I click here and when I mark as ransomware protection and then unmark as a ransom protection, I can do that also. Okay. Now I will show you how you can protect your tally data because this guard is specially designed for the tally data. Okay. So generally in the tally, data is open like this, right? You can see in 23 companies are there in my computer, right? And this data is like this, right? Okay. So what we provide here, the option in the Secura, as I told you, the settings module. Okay. So let me go to the settings module. You can see the settings module. In the privacy settings, you can see the active folder lock, which is controlled by the admin password. So I will enter the admin password. Okay. Now you can see the folder lock module. Everybody can see the folder lock module. Yeah. Okay, good. So now in the folders, what I need to do, I need to select the folder which is I want to protect. So I'm selecting the tally data folder. Now tally data folder I'm selecting now. You can see the data folder I've selected now. Now it's added now.
Now in the 3 dot, we provide option to enable security, and I mark as a hidden. Okay. Mark as a hidden. Now when you mark as a hidden, you can see the data folder is not visible now. And even when I type the data folder, you will see the error. Windows can't find C drive tally.erp9/data. Check the spelling and try again. Okay. Even in the DOS command prompt. Let me show you in the DOS command prompt. Element not found. You can see this. So the way we protect the folder in such a way that in the operating system, you won't see this folder available. Okay. So now you will say that how this tally application will work, right? Mr. Raja, Mr. Reddy? Yeah. So now what we have done here in our application, let me show you. Now you can see in the select company, I can't see the data, right? So what we have done in the our application, we provided the feature of program. So which program I want to allow to access the data folder, I can select that program. So I am adding the tally application now. Okay. So I just added the tally application, and now I'm enabling the tally application to access the log folder. Now you can see this. When I go to the select company, I can see the tally data. Yeah. Now still outside of the tally, still my data is not accessible. You can see. You can see the data is not accessible. Okay. So only through tally you can access your data. Now let me show you. If I disable tally, now again you can see when I disable. Now let me show you. It's not accessible. Let me enable again. I enable again. Okay. Okay. Now you can see I'm able to access. So this is how our application secures your tally data first level. Now what we have done also in the 3 dot, you can see the tally mode. You can see the tally mode here. So what we have done now. So generally the tally is not in your control. See, once we provide this solution, still your employees can access the tally, and tally you are still not in your control. So what we have done now, we have provided a tally mode options. So when we switch on the tally mode functionality, what our application will do, whatever the data is there in your computer, we encrypt all the data one by one, and then we upload on our Secura cloud server as an encrypted version of the files. Okay. Why we upload the encrypted version? Because that file should be in your control, not in any other control. Okay. So we encrypt each and every files with the random key, and we upload that files on the cloud server. Okay. So now I will show you every files are getting uploading. Okay. And just hold on, it's uploading. And we also provide the facility that you can secure, that you can create your own cloud server in your environment also. If you want to create your own cloud server in your premises, we provide you that feature also. So you can convert any of your computer to the cloud server. Okay. Just hold on, it's uploading. Okay. So now you can see in the Secura cloud server, when I go to the C drive, my users, and you can see all the files now. Everybody can see the files, tally data files. Yes, sir. But you can see some of the files, still not able to visible. It's not visible, right? Some of the files are not visible, right? Because I have a 23 company, and you can see right now almost 6 or 7 companies, right? Why? Because in our application, we also provide you one more feature, which is called private area. Okay, so I have not enabled the private area because I marked some of the data in the private secret area. So which I need to enter the secret area password. And when I enter and I enable the private area, apply, and it will again ask me to re-log in, and I'm re-logged in. And then just let me share my screen. Okay. And here when I go to the cloud module now, when you go to the cloud module, you can see now Secura folder C drive. Now you can see all the files.
Okay. Why? Because some of the files I mark as a secret private area. You can see the private area icon here. Okay. So that also we provide the facility. Now the advantage of here, now syncing the data with our cloud server, the advantage, first advantage, whatever the changes you are doing, we maintain the version manager. So for example, you have done the 10 changes, 15 changes, 500 changes, whatever the number of changes you are doing in your files, date-wise, your version will be maintained in the cloud server. So for example, sir, you know, you are the CSO, you know, sometimes what happens, some data will be changed or somebody delete some entries by mistake. Okay, so you can recover that file data from the previous version. Okay, so that is the one advantage. Second advantage, if your hard disk is getting crashed, you don't have to worry because your data is already synced with the cloud server. Okay, now third advantage, one more advantage, that the data is in your control. How? Let me show you. Now you can see this tally is open, right? But let me go to the tally now. You can't see the data in the tally now. You can see I provided the access, but still you can see the data in the tally. So how the tally will work now? So in Secura, we provide you the tally application launcher icon. So when I click on the tally application launcher icon, okay, then what will we do is you can see the message tally files are successfully decrypted. We decrypt the data, download the data from the cloud, we decrypt the data, and then we start the tally application. Now you can see I'm able to access the data. Okay, but outside of the Secura, I won't able to access the data. So now you have a control. Means suppose somebody log into your system, he has to enter the Secura password. So that control is in your end. So so what we provide also in Secura. So when you go for the multi-user licenses, you can enable disable access of any user. Enable disable access of any users. Okay. So what do you see as a product? Please comment, sir. Hello. I didn't understand. What were you saying? What I'm asking you question, sir. That do you see the advantage of the product, sir? I do. I have a question. Yes, please ask the question. Do I have to upgrade my PC specifications? I mean, is this software heavy for the PC? See, what is your PC configuration, sir? 8 GB RAM and 1 TB, I suppose. Okay. So basically we require at least 4 GB RAM. Okay. Okay. And we suggest that you should have at least i3 or i5 PC. Okay. In Core 2 Duo it will work. Core 2 Duo it will work, but it will work slowly. Sometimes where it will work slowly. Let me tell you what we have done also, because nobody's asked the question, but I will explain you. In the Tally, you have a feature of Tally data backup. Yeah. Okay, so when you take the backup, automatically that file also get encrypted like this. These files are encrypted automatically. Okay, so in our application, what we do, any files are created, automatically it will get encrypted. Means wherever you store, it's not like in your computer, even in the removable devices also you store, automatically it will get encrypted. You can see this encrypted file now. Yeah. Okay, so this is how this file is getting encrypted with your key. So suppose somebody take the backup or copy the files and share somebody's, you don't have to worry. Why? Because to read that file, to decrypt that file, they require keys, and keys in your control. I think Mr. Raja will understand very well because he is a programmer, right? Yes, sir. Yes. So this is how we have developed this product, and the process of securing data, transporting keys, where this product is applied for the patent also. Okay. So now anybody has a question, I will answer your question, sir. Yeah, no doubt, sir. I'm Raja. Yeah, please ask. Hello. Yes, please ask Okay. questions, sir. Yeah. Single user setup Tally is no need security, but multi-user setup is only need this type of security. Even in single user also requires. I have a 7 or okay, no problem, sir. Most of customers need a multi-user setup. Yeah. He need some privacy softwares. It will asking. Yes. Sir, I have 7 systems. The software is installations required on individual systems.
Yes, each and every system is required. Why it will require? I will tell you why. Okay. Because what we do, we install the Secura platform in the server where the data is there. Okay. So when you secure the data folder, the data folder will be only accessed through our application only. So when you see the network, you can see the folder, but you won't able to access this folder in the network. Through Secura, Okay. you will able to access. Okay. Okay, so that facility we have provided. Okay. Getting me, sir? Yes, sir. Yes. Yeah. So any questions, sir? If I put it on multiple systems, do I have a central management module in a single system, or every system has its own? Sorry, can you repeat the question? I some misunderstood some questions. So please. Yeah. Say I have like 3 systems or 5 systems. Right. And to manage all those 5 systems, do I have a central management module, or every system Yes, has central. its own? Central management module. Central. Yeah, I will show you. This is the central management module we have. Okay. So where we can you can see this. This is the central management module where we manage all the employees. Okay. So this is a central management module we provide. Yes, sir. Thank you. Yeah. Any more questions? Another one doubt, sir. I'm Raja. Yeah. Mr. Bhavin. Sorry. Yes. Mr. Gold Jain also there. So, and you can also ask the question if you have, or if you are not able to speak, if you have a problem, then you can ask my question in the chat box also. Yes, Mr. Raja, please ask the question. Tally is one option available, sir. Backup option. Yes. Your encrypted data, encrypted and decrypted, and safely. The Tally data only accessible, only Tally, sir. But the backup option is available in Tally. Yes. Any staffs can back up the data? That's what I said, sir. So if I take backup in my Tally application, that file will be automatically encrypted. The backup file will be automatically encrypted with the Secura extension. So nobody will be able to copy that data. Means they copy the data, but they take the data, but there is no use for them. There's no because, use. Okay, yeah, okay. because it's encrypted. Okay, sir. Sir, is any need any TDLs or TDLs, sir? TDL means I don't understand what your question, sorry. There no need any other TDLs in Tally, sir? Means no, you needed any TDL, means the Tally data licensing, or any other add-ons you are saying? Add-ons, we are using any add-ons in TDL Tally, sir? No. We are not using. Just we are controlling the Okay. data. Just that's it. Nothing else. We are not doing anything with the Tally. Okay. Yeah. Sir, you are providing any demos, sir, for partners? Yes. So that's what I'm trying to say. If you register today as a partner, we will share you the link. Then this product you will get as a free. Okay. Okay, as a partner. And Okay. yeah. And then why we provide this free? Because you can share this part to your customers. You can showcase the demo. Okay. And this is the product pricing. Okay. So for the single user, we charge 5,000 rupees per user. Okay. We charge one-time installation and training charges. Okay. And support is standard is free. If suppose somebody require gold and platinum support. So standard support means the maximum reply time will be 48 hours. Gold will be 12 hours and platinum 4 hours. Okay. So that is the charges. And why we have added this training and installation. So in future also partner will earn more on the installation and training charges. That's the reason we added all these charges. That's the objective of adding the charges. Okay. Because we require majorly, see, the software will be okay, but the main time everybody is going in the installation, training and supporting. That's why we have added these charges. Okay. Any more questions? Anybody has a question? हेलो Yes. सर, जैसा ये अपना 40 गेट का डिवाइस आता है, हार्डवेयर डिवाइस साथ में होता है, हाँ. जो
practically. तो अपना सिक्योर के अंदर इट्स ओनली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। हाँ, नहीं, ये हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है, हमारा कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। क्योंकि जो यूटीएम्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर और एक और चीज जानना चाहते हैं, सपोज टू कोई कंपनी है वहाँ पे 10 पीसी है, कोई कंपनी है उसकी उधर 400 पीसी 200 पीसी है, हाँ, तो इनका जो आपका जो फायरवॉल वर्क करेगा, इसका जो आपका पॉलिसी वगैरह अप्लाई करने का, तो उसके लिए कोई चार्जेस में फर्क होगा इसका साइज पे? मीन्स मतलब फायरवॉल और ये सब, सी मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन सर, प्लीज कैन यू एलाबोरेट मोर ऑन योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ हाँ हाँ, जैसे अपना सिक्योर गार्ड आपने जो बताया कि भाई आपका